we'll be covering all of that today. Is everything all right? So the immune system is basically the defense system of the body. Defense. And defense against what? Against attacks of infections, foreign cells, toxins, and the body's own abnormal cells, such as cancer cells. Right? There are quite a lot of disease-causing organisms, bacteria, viruses, even fungi. So all of these can cause infections and they can produce disease. This is why they're also called pathogens, disease-causing microorganisms. Right? So it is a collection of cells, tissues, proteins that work together to defend the body against all of these foreign invaders, infections, okay, foreign cells and toxic substances, yeah, abnormal cells like cancer cells. So the immune system will defend the body against all of these invaders. So there are two divisions of the immune system. Here's a chart. So the immune system is divided into the innate immune system and the adaptive immune system. So the innate immune system forms the first and second line of defense against all these pathogens and all of these invaders, right? So what that means is that whenever there is an infection or whenever there is a sort of problem, okay, koi bhi invasion, if there is any sort of invader, let's say you get a cut, या कोई इंजरी हो जाती है या you get a cut. So the first immune system, the first line of defense that comes into play would be the innate immune system. Like it takes from minutes to hours to kick in, right? So innate immune system के कुछ components हैं. So the first line of defense is actually the physical and chemical barriers in the form of the skin and mucous membranes. If this is our body, so yeah, अगर ये हमारी पूरी body है, so we know that we have a mouth and then there is another opening, ठीक है, हमारी nasal cavity है. So the organ that is covering the entire body is the skin, right? And the skin is the best defense that we have, the best barrier, the first barrier that the environment has to cross in order to get to the body. Okay? So the skin is a very important physical barrier. And then there are the mucous membranes, and I'll tell you what that means. So the mucous membrane, slide. So the mucous membrane is actually a lining. It is a lining of the cavities in our body. The oral cavity is lined by mucous membrane. The nasal cavity, it is lined by mucous membrane. Our entire gut, the alimentary canal, it is lined by a mucous membrane. Then the the reproductive tract, the genital tract, that is also lined by mucous lining. So this is also a barrier because it produces something called mucus, and mucus traps pathogens. And then the skin itself will secrete some oily substances. It secretes oily substances which has antimicrobial properties. So this is like the first line of defense. So yeah, फिर इसके बाद
Then there's the second line of defense, which comprises the immune cells, and there are some proteins, and then there's the inflammatory response. So let's cover each of this in detail. See, second line of defense mein there are immune cells, and those immune cells include phagocytes. Now we've talked about phagocytosis before. कि phagocytosis में the immune cell will simply engulf bacteria and eat it. या कोई भी pathogen होगा वो the cell will simply engulf it and eat it. That is phagocytosis. The जो phagocytic cells हैं, there are macrophages and there are neutrophils. And then there's another category of cells called the natural killer cells. They also have another function. Here, antimicrobial proteins है. Now these are proteins that have some sort of antimicrobial property. मतलब they will basically kill pathogens. These proteins will kill pathogens. तो इसमें lysozyme है, इसमें complement proteins हैं, and then there's another type of protein called interferons, and interferons are for resistance against viruses. Then there's the inflammatory response. So inflammatory response is brought about by basophils and mast cells and histamine. अब कल मैंने पढ़ाया था when I was teaching you components of blood. So basophils and mast cells नहीं बताया था मैंने. Basophils का मैंने बताया था. Are basophils granulocytes or agranulocytes? Are basophils? Yes, they're granulocytes. Right. So let's talk about each of these cells. Okay. Neutrophils क्या होते हैं? They are phagocytes, but they're very short-lived and they mainly fight bacterial infections. They're short-lived. इसका मतलब है कि these are those soldiers of the body that will be on the front line. सबसे पहले pathogen को ये face करेंगे, and then they will also be killed first. They will be killed first, and they will form pus. So pus is basically, dead white blood cells, or white blood cells may be mainly neutrophils. Then there are macrophages. Now macrophages actually develop from immature cells called monocytes. Monocytes are immune cells जो blood में घूमते रहते हैं, but when they enter tissues, they mature and they develop into these special cells called macrophages. Macrophages are phagocytes. और ये tissues कौन कौन से हो सकते हैं? The tissues can be spleen, tonsils, lymph nodes. There can also be other places, but अभी के लिए if you remember this as well तो काम चल जाएगा. Spleen, tonsils and lymph nodes में macrophages होते हैं, and what macrophages do is कि they are on the lookout for pathogens. जब उनको, if they encounter a pathogen, they will simply phagocytose it and take care of the threat. So you can see what happens in phagocytosis. The cell extends these projections. ठीक है, वो pathogen को इस तरह से surround करता है, and then it will engulf it by endocytosis. And once it has engulfed it, then the lysosome will release certain enzymes, and those enzymes will digest the pathogen, and digest करने के बाद जो उसका सारा debris होगा, parts of the pathogen, dead and digested parts, those will be released from the cell by exocytosis. That's the entire process of phagocytosis. Whether it takes place in macrophages or neutrophils, process वही रहेगा. So macrophages can actually do two things. They can phagocytose the pathogens, but they can also do something called antigen presentation. And what that means is कि इसमें I showed you कि ये pathogen बाहर निकल रहा है ना. So what macrophages can do is they can take these parts and they can present it on the surface. इसको कहते हैं antigen presentation. And इसका purpose ये होता है कि other immune cells that are present in the body, they will see this antigen presented. So what they'll do is they will see these other immune cells that are present, they will see the antigen being presented on the macrophage, and they will be alerted. ठीक है, they will be alerted कि body में pathogen आ गया है, right? And so antigen presentation has a function. It alerts
other immune cells to the threat. Are all of you following me at this point? इसमें अभी तक कोई भी चीज़ ऐसी है जो किसी को नहीं समझ आई हो? Because immunity is the sort of chapter जिसमें I have to build concepts शुरू से. Yeah, great. I'm glad that you're following me. Yeah, what do you want me to repeat, Vanya? The antigen presentation bit या पूरा macrophages का बताऊं, क्या बताऊं? If you want, you can open your mic. Macrophages, okay. So I was simply saying कि macrophages are phagocytes. ठीक है, वो फेगोसाइटोसिस करते हैं, उनको पैथोजन दिखता है, वो उसको खा जाते हैं, खा के उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद उसको बाहर निकाल देते हैं. लेकिन वो सिर्फ बाहर नहीं निकालते, दे ऑल्सो डू समथिंग कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटेशन. एंड व्हाट दैट मीन्स इज कि वो जो डेड और डाइजेस्टेड पार्ट्स है ना पैथोजन के, वो उसको अपने पास ऐसे प्रेजेंट करते हैं, अपने सरफेस के ऊपर इस तरह से दिखाते हैं फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू सी कि उन्होंने इस पैथोजन को मारा है और ये वो पैथोजन का के साथ ये हशर हुआ है, ये दिखाने के लिए. और उसका पर्पस ये होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन का कि इट अलर्ट्स अदर इम्यून सेल्स टू द थ्रेट. मतलब जो और इम्यून सेल्स घूम रहे हैं ना बॉडी में, देयर माइट बी अदर macrophages that are circulating, there might be other neutrophils, so it simply alerts all of those cells see कि यहाँ पे antigen present हुआ है और वो alert हो जाते हैं, right? Very similar to a battle zone कि एक एनिमी कहीं पकड़ा गया तो वो फिर चिल्ला चिल्ला के बता दे कि इसको पकड़ लिया हमने, एंड नाउ यू हैव टू बी अलर्टेड टू द थ्रेट, इफ दैट मेक्स सेंस. अब समझ आया मैक्रोफेजेस वाली बात? Do we have to learn their percentages from the book? You know what, I wouldn't recommend doing that because you cannot learn itni sari information. I have not seen these questions being asked in past papers ke wo percentages aur ye sab. I wouldn't recommend. Past paper mein koi question mil jaye to you can challenge me of course, but mujhe nahi mila, so it's like a waste of energy. So now I'll try to pick up speed a little. So macrophages can phagocytose pathogens and they can also do antigen presentation. I'll talk about antigens. Okay, let's talk about antigens. Batai deti hu. So antigens are basically anything that produce the immune response in the first place. Anything that the body encounters और उसकी वजह से immune system activate हो जाए, that is an antigen. Antigens can therefore be microorganisms like viruses and bacteria. It can be a foreign particle. It could be dust. Even dust could be an antigen अगर immune system, अब जैसे allergies हो जाती हैं जिन लोगों को, तो stuff like pollen and stuff like dust वो antigen वाला काम ही हो जाता है उससे. क्यों? Because immune system activate हो गया उसके against. It could be a toxin or a poison, or it could be an abnormal cell such as a cancer cell, like I've already told you. That is simply what an antigen means. तो जब बॉडी के अंदर पैथोजन आ गया, इट कैन बी कॉल्ड एन एंटीजन क्योंकि इसकी वजह से एक हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया. सो एंटीजन प्रेजेंटेशन आई डिस्कस्ड. सी मैक्रोफेज, दिस इज अ मैक्रोफेज. ठीक है, मैक्रोफेज को पैथोजन दिखा, उसने उसको खा लिया, उसको डाइजेस्ट कर लिया, एंड इट सिंपली डिस्प्लेड इट ऑन इट्स सरफेस. दैट्स एंटीजन प्रेजेंटेशन. So what is this exactly? Activation of the immune response. Again, same thing. Let's see what's next. Right. अच्छा, अब ये फेडरल में दिया हुआ है. This is only in federal. So I'll just spend like 2 minutes, 30 seconds explaining this. So macrophages secrete special proteins called interleukins. Only remember this if you're a federal student, otherwise you can forget this. कोई मसला नहीं है. Interleukins are special proteins. These are secreted by macrophages. And they produce some effects. अब वो effects क्या हैं? Fever, interleukin 1 specially. Interleukins की बहुत सारे types हैं. एक type of interleukin है interleukin 1. Interleukin 1 causes fever. Just remember this. The way this is given in the Sindh book is कि macrophages and other immune cells, other innate immune cells will release substances called pyrogens. Pyrogens, this is an important term. This everyone should know. Everyone.
These are simply proteins जिनकी वजह से fever promote होता है, like substances that promote fever. और fever में क्या होता है? The hypothalamus, the part of the brain that controls homeostasis, that controls things like temperature, that controls things like uh, osmotic balance, that controls thirst and hunger और ये सब, तो it also controls temperature. सही है? तो hypothalamus का जो temperature set point है वो उसको बढ़ा देते हैं. बढ़ाने से ये होता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो द हाइपोथैलेमस डजंट डू एनीथिंग टू ब्रिंग इट डाउन. हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वो रेज्ड रहता है, और दैट रेज्ड टेम्परेचर इज व्हाट इज कॉल्ड फीवर. और फीवर का फंक्शन ये होता है कि इट एनहांसेस द इम्यून रिस्पॉन्स. द हायर टेम्परेचर एड्स इन किलिंग द जर्म्स एंड द पैथोजेंस. Does that make sense to everyone? Great. So I'll continue. तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? We first discussed okay, there are two components of the immune system. There is the innate system and then there is the adaptive system. Innate immune system में there is the first line of defense. सबसे पहले अगर कोई invader आता है तो what do they see? They see the physical barrier of the skin. They encounter the mucous membranes. जब वो cross हो जाती हैं, then the second line of defense plays an important role. Second line of defense में I have been talking about the immune cells. Immune cells में मैंने बताया कि phagocytes होते हैं, such as macrophages and neutrophils. And now I'm going to talk about natural killer cells. Natural killer cells, they're very cool cells. What they do is they recognize and they kill virally infected cells and cancer cells. Now they have an advanced job. Why? क्योंकि macrophages क्या कर रहे थे? उनको चलता फिरता एक पैथोजन दिख गया, उन्होंने कहा कि अरे ये तो एनिमी है ही है, इसको तो उन्होंने पकड़ के मार दिया. ठीक है? But natural killer cells identify the enemy when it has infiltrated the host cells. ठीक है? अब viruses हैं, viruses are very very challenging threat, because the thing is कि viruses can infect host cells and hide within them. तो natural killer cells will identify cells जिनके अंदर virus छुपा हुआ है, and they will kill those cells. And they also kill cancer cells because they're abnormal cells of the body, right? So cancer cells or virally infected cells के against natural killer cells are sort of deployed. ठीक है? So let's say that this is a natural killer cell, and this is a cell that was infected by a virus. ठीक है? तो अब होता क्या है? अब you can see this is a receptor. ये सब एक receptor है. Natural killer cell ने देखा कि ये एक infected cell है. So it binds to the infected cell on the receptor, and it starts to release some proteins. The natural killer cell will start to release some proteins that will create holes in the membrane of the infected cell. And as a result, the entire infected cell will undergo lysis. Lysis is what? Simply breakdown. पूरा का पूरा सेल फट जाएगा. वो प्रोटीन्स जो रिलीज करेगा वो प्रोटीन्स सेल्स को फाड़ देंगे. It punches holes in the cell membrane and causes lysis of the target cells. That is how natural killer cells function. So they're very cool. So अभी हमने immune cells discuss किए. वो भी कौन से immune cells? Innate immunity के immune cells. Now we're going to talk about antimicrobial proteins. मैंने बताया था कि lysozyme, complement proteins, and also interferons. So let's talk about lysozyme. Lysozyme is also present in tears and saliva. It is present in lysosomes. It is basically an enzyme, and it causes lysis of bacteria. Bacterial lysis का एक ही तरीका है, membrane को फाड़ दो. Membrane फट जाएगी तो the bacteria is finished. So lysozyme. Then there are proteins called complement proteins. And complement proteins, it's not just one single protein, it is actually a group of proteins. There are like 20 to 30 complement proteins that are circulating in the blood. And what their function is, they will attract phagocytes to the war zone, like to the site of infection, ya jahan pe bhi masla hai. They will attract phagocytes to that particular place, and they will simply boost the immune response. They will enhance the immune response. And how will they do that?
इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन. ये जो इन्हांसमेंट ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स है that complement proteins do, it is called opsonization. If you can remember the word, it would be very nice. वैसे सिंध में तो नहीं है, फेडरल में गिवन है. So opsonization is a function of the complement proteins. Let's talk about interferons. Interferons are proteins and they are secreted by virally infected cells to warn other healthy cells. ठीक है, अब एक वायरस अगर बॉडी में फैल जाता है तो सम ऑफ द सेल्स विल बी इन्फेक्टेड एंड देन सम अदर सेल्स विल बी हेल्दी, जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, जो अभी तक बचे हुए हैं. तो वो जो बचे हुए सेल्स हैं, interferon will go to those interferons, will signal to those cells to develop antiviral resistance. और वो किस तरह से, we do not need to know. Just remember कि interferons are important for developing resistance against viruses. So far so good. ये सब समझ आया? Okay. Now let's talk about inflammation. And inflammation is actually a very common word जो everyday use में भी हम use करते हैं कि inflammation हो रही है या इस तरह से. तो inflammation is an immune response. ठीक है, inflammation के कुछ signs होते हैं. ठीक है, redness, pain, swelling. You might even feel के as if a region of your body is becoming hot. तो दिस इज ऑल इन्फ्लेमेशन. ये सारे साइंस हैं इन्फ्लेमेशन के, एंड इट इज़ जस्ट अ साइन दैट योर इम्यून सिस्टम इज वर्किंग. और इन्फ्लेमेशन किस तरह होती है, लेट्स जस्ट सी. सो आई टॉक्ड अबाउट मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, राइट? सो मास्ट सेल्स, जस्ट रिमेंबर दैट देयर आर टाइप ऑफ इम्यून सेल, एंड देन देयर आर बेसोफिल्स. बेसोफिल्स इसमें मेंशन नहीं है इस डायग्राम में. So basophils in mast cells release a chemical called histamine. ठीक है, histamine क्या करता है, जो हमारी blood vessel walls है ना, it makes the blood vessel walls more leaky, like it dilates them. Histamine makes capillaries leaky, मतलब dilate हो जाएंगे, the capillary walls will dilate. And what that would do is कि blood flow ज़्यादा होगा तो you will see that redness वाली चीज़. फिर ये और histamine के और भी functions होते हैं. It is responsible for the pain that you might feel and for that discomfort that you might feel जो inflammation में होती है. तो just remember कि histamine, mast cells and basophils, they bring about the inflammatory response. और inflammation is important. Just remember इतना. सो इनेट इम्यून सिस्टम तो इसमें कवर हो गया. इसमें किसी को कोई मसला? दिस इज लाइक अ वेरी बेसिक ओवरव्यू. इफ यू डू नॉट हैव दिस फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, तो आप जितना भी फेडरल खोल लें, कोई भी किताब खोल लें, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन द बुक. सो दिस इज लाइक लेइंग द फाउंडेशन फॉर वट एवर यू स्टडी अबाउट द इम्यून सिस्टम आगे. सो आई डू होप के समझ आ गया. नाउ आई विल टॉक अबाउट अडैप्टिव इम्यूनिटी. सो द थिंग इज कि इनेट इम्यून रिस्पॉन्स तो बहुत इमीडिएट होता है. ठीक है, इट हैपन्स एज सून एज यू इंजॉय योर सेल्फ या एज सून एज यू गेट इन्फेक्टेड. तो इनेट इम्यून सिस्टम तो बहुत जल्दी काम करता है. इट इज़ लाइक वेरी इंस्टेंट, वेरी इंस्टेंटेनियस, नो डिले एट ऑल. सो इनेट इम्यून सिस्टम is not our only response, and the innate immune system is not often sufficient to deal with the threat. So that is why we need adaptive immunity as well, and that is our third line of defense. So adaptive immunity actually takes some days to develop. It can take a few days, it can take a few weeks, not a few weeks, like 1 week or so, to become activated. And it is longer than the innate response. Innate response quick hota hai, innate response zara short-lived bhi hota hai. So, and it is highly specific. Now the thing is that innate immunity is the immunity that every individual will have since birth, right? I think I didn't mention that. So innate immune system, whenever a baby is born, तो उसमें कोई immunity हो ना हो, innate जरूर होती है. And the thing is that innate immune response
हर इंडिविजुअल के अंदर वही होगा, हर इंडिविजुअल के अंदर वही मैक्रोफेजेस होंगे, वही न्यूट्रोफिल्स होंगे, वही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होंगे, वही इंटरफेरॉन्स होंगे. सो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स डज नॉट वैरी, बट अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स will be specific not just for from one individual to another, but also for one type of invader to another. So there will be a different immune response for different invaders. If you get a cold, ठीक है, अगर कॉमन कोल्ड हो जाए किसी को, अल्लाह ना करे, कॉमन कोल्ड भी बहुत बुरी चीज़ है, कॉमन कोल्ड है या लेट्स से कुछ और हो गया, एनी इन्फेक्शन, लेट्स से दे गॉट मीजल्स, ठीक है, तो कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है, कुछ भी होता है, सो फॉर एवरी टाइप ऑफ थ्रेट देयर विल बी अ डिफरेंट अडेप्टिव रिस्पॉन्स. कॉमन कोल्ड के लिए अलग होगा, मीजल्स के लिए अलग होगा. इफ समवन गेट्स कोविड, दैट वुड बी एन entirely different response. So it is different for every type of threat. And यहाँ पे it is actually brought about by lymphocytes. The adaptive immune response is brought about by lymphocytes. So lymphocytes के actually 3 types हैं. There are natural killer cells. Natural killer cells are not part of the adaptive response. I just wanted to tell you कि natural killer cells are lymphocytes, but they're part of the innate response. तो मैं यहाँ से हटा रही हूँ in case कोई notes देख के confuse हो जाए. Then lymphocytes के जो main types हैं, these are B cells and T cells. B lymphocytes and T lymphocytes, and they are responsible for the adaptive response. Adaptive response के दो categories हैं, दो subdivisions हैं. There is humoral immunity, which is antibody mediated, and then there is cell mediated immunity, जिसमें there is a cellular function. So, acha, now here's a question. Where are blood cells produced? The cells of the blood that I taught you yesterday, where are those cells produced? Bone marrow. Good. But the thing is कि जो white blood cells हैं हमारे, बल्कि ये जो B cells हैं और T cells हैं, they will be produced in the bone marrow, yes, and इनकी maturation will be in, T cells will mature in the thymus, hence they're called T cells, and B cells, they mature in the bone marrow, right? तो बनते बोन मैरो में हैं बी सेल्स और मेच्योर भी वहीं पे होते हैं, लेकिन टी सेल्स विल मेच्योर, विल बी फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, बट दे विल मेच्योर इन द थाइमस. द थाइमस इज अ gland. It is somewhere in the neck. No, not in the neck. It is between the. It is in the chest between the lungs. It is between the lungs, in the space between the lungs. वहाँ पे thymus होता है, and thymus में T cells will mature. So you can think of T cells as, जैसे T cells are sort of sent to a boarding school. Bone marrow में produce होते हैं, लेकिन उनकी schooling होती है thymus के अंदर. You can think of it that way. And B cells बनते भी bone marrow में हैं और mature भी वहीं होते हैं. So that's just that. Then, how is adaptive immunity specific? I've been telling you कि adaptive immune response बहुत specific है, but why is it specific? How is it specific? So the thing is कि B cells and T cells will work differently for every antigen. इतना तो पता है. Now this means if they work differently for every antigen, तो इसका मतलब है कि they recognize antigens. Because वो पहचान सकते हैं antigen को, जब भी तो वो अपना response different रखेंगे हर antigen के लिए. So in order to recognize anything in biology, you need something called a receptor. एक hormone अगर आता है, and अगर एक target cell को काम करना है in response to that hormone, the target cell should have a receptor. इसीलिए अगर एक B cell और T cell को एक specific response produce करना है against an antigen, तो it must have a receptor against that antigen. Therefore, B and T cells have different receptors for different antigens. Now, when an antigen strikes, the B and T cells that have the right receptor will become activated. Let's say someone is infected with COVID, right? So whenever when the COVID virus, when the virus enters the body,
तो वो वायरस एक्चुअली बी सेल्स और टी सेल्स डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और वो कौन से सेल्स डिटेक्ट करेंगे? जिनके पास वो स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा। जब वो रिसेप्टर बाइंड कर जाएगा वायरस के साथ, then the cells will be activated. When they're activated, the cells will basically do whatever they need to in order to take care of the threat. ये बात समझ आई? Does anyone have questions regarding this? Like, I want this to make logical sense. Sorry. So let's talk about humoral immunity. You're all familiar with the word antibodies, but here's a secret that I want you to know. Okay, antibodies are soluble proteins. Say yeah. No big deal. Soluble proteins, and okay, antibodies are soluble proteins. But the thing is that these proteins are actually the B cell receptors themselves. ठीक है, तो जो बी सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं, एक्चुअली वही एंटीबॉडीज भी होती हैं. एंटीबॉडीज आर जस्ट द बी सेल रिसेप्टर्स. जब वो रिसेप्टर एंटीबॉडी से अलग हो जाते हैं, वो सिक्रीट हो जाते हैं, तो हम उनको एंटीबॉडी बोलते हैं. ये किसी को कोई प्रॉब्लम ये समझने में कि बी सेल रिसेप्टर्स आर एंटीबॉडीज? राइट, आई विल राइट दिस इन द चैट. Antibodies are simply B cell receptors. Nabiha, is that clear? Nabiha Tahir, I'm waiting for you. Okay. So, अब अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पढ़ाऊँ, अच्छा, बाय द वे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी, इट इज़ नॉट इन सिंध, इट इज़ ओनली इन फेडरल. So, but I'm still teaching it to you. मतलब if you can pay attention, if you can understand this, तो बहुत अच्छी बात होगी. If not, then कोई मसला नहीं है, because it's not in your syllabus. ये सिर्फ फेडरल वालों के लिए. तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पढ़ाऊँ या स्ट्रक्चर ऑफ बी सेल रिसेप्टर पढ़ाऊँ, बात एक ही है, बिकॉज दे आर द सेम थिंग. So each B cell antigen, बल्कि I won't read the text, I'll just tell you कि antibody. Now let's just call it antibody. अब मैं इसको receptor नहीं बोलूँगी, अब मैं इसको antibody बोलूँगी. It is a Y-shaped protein. You can see it is Y-shaped. नजर आ रहा है साफ साफ. It is Y-shaped. ठीक है? And it consists of 4 polypeptide chains. 4 polypeptide chains का मतलब है कि this is a quaternary structure. तो अगर बायोमोलिक्यूल्स वाले क्वेश्चंस करते करते you see a question कि antibodies are primary, secondary, tertiary, quaternary, so you will pick quaternary. There are 2 heavy chains and 2 light chains. ठीक है, heavy chains भी identical होंगी दो, and there will be 2 identical light chains, and those chains are linked by disulfide bridges. You can see these bridges, ये जो yellow में है ना, disulfide bridges will link the heavy and the light chains. ये heavy chain है पूरी एक. ये जो अंदर का बड़ा सा Y है, this is the thing that looks like a funnel. ये this is one heavy chain, या बल्कि wait, हाँ, this is one heavy chain and then this is one light chain. This is one light chain. ये ऐसे है. अब इसमें the heavy chains and the light chains, they will have some region called a constant region और एक होगा variable region. अब ये जो पार्ट मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है ना, इधर, दिस, ये कांस्टेंट रीजन है. ये है कांस्टेंट रीजन ऑफ द हेवी चेन एंड दिस इज द कांस्टेंट रीजन ऑफ द लाइट चेन. ये कांस्टेंट का मतलब ये है कि कोई भी एंटीबॉडी हो, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी हो, लेट्स से इट इज द कोविड एंटीबॉडी और द कॉमन कोल्ड एंटीबॉडी और द मीजल्स एंटीबॉडी और द मलेरिया एंटीबॉडी. बट मलेरिया तो नहीं, हाँ मलेरिया भी कह सकते हैं. मीजल्स की एंटीबॉडी हो या मम्प्स की एंटीबॉडी हो, कोई भी डिजीज के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी है, कांस्टेंट रीजन सब में सेम रहेगा. द ग्रीन पोर्शन विल रिमेन द सेम. लेकिन जो वेरिएबल रीजन होगा ना, नाउ पे अटेंशन, द वेरिएबल रीजन इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी जहाँ पे एंटीजन जाके चिपकेगा, राइट? तो ऑब्वियसली हर एंटीजन डिफरेंट होगा. जब हर एंटीजन डिफरेंट होगा तो उस एंटीजन के लिए जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो भी डिफरेंट होगी. तो ऑब्वियसली ये तो वेरिएबल पार्ट होगा ही.
ये बात समझ आई? सबको समझ आ गई ये वाली बात? एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर? ओके, गुड. So the constant region is the same for every type of antibody, and the variable region will be different for every type of antibody. And this is common sense because variable region is the site where the antigen will bind. तो ये तो वैरी करेगा ही. तो ये बात हो गई. That's the structure of the antibody done. Now, antibodies are also called immunoglobulins. This is another term that you should know. It would be nice if you can remember this term. ठीक है? IG for short. Capital I, small g. अब antibodies की 5 types हैं, 5 classes हैं, and you can use the mnemonic game to remember this. GAMED, IgM, IgG, IgA, IgE, and IgD. Now you can forget this. No one is going to ask you this on the MCAT. लेकिन I don't know why people have been sending me questions in my DMs. बहुत ही कुछ आउट ऑफ सिलेबस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए, अगर वो याद करना चाह रहे हैं तो ये याद कर सकते हैं. I'm just fulfilling my responsibility. So what do antibodies do? They cause clumping or agglutination. Clumping का मतलब है कि पैथोजन आया, ठीक है, पैथोजन इज वेरी हैप्पी कि इसको कोई नहीं पकड़ा, तो एंटीबॉडी आएगी, एंटीबॉडी देखेगी, एंटीबॉडी इसको पकड़ लेगी ऐसे करके, एंड बहुत सारी एंटीबॉडीज होंगी. दे विल कॉज देम टू क्लम्प टुगेदर. मतलब एक तरह से हैंडकफ्स लगा देंगी, उसकी मूवमेंट को ख़त्म कर देंगी. उसकी मूवमेंट जब एंटीजन, जब पैथोजन भाग नहीं सकेगा, तो यू सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड इट टू वन प्लेस, एंड नाउ व्हाट विल हैपन इज कि फेगोसाइट्स आएंगे और इसको खा लेंगे. जैसे डाकू को पकड़ के रस्सी से बांध देते हैं ना, तो ये दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दीज एंटीबॉडीज आर डूइंग. दे विल सी द पैथोजन एंड दे विल बाइंड टू इट. ऐसे ऐसे बाइंड करता है ये. बाय something's wrong. ऐसे करके आएगी एंटीबॉडी और इसको पकड़ लेगी, एंड देन यू विल हैव ऑल योर फेगोसाइट्स कमिंग इन, मैक्रोफेजेस आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे या व्हाटएवर, एंड दे विल सिंपली कॉज फेगोसाइटोस द बैक्टीरिया. That is what antibodies do. Acha, I use the word opsonization for complement proteins. This is also opsonization. So summary of this is कि antigen will come. Now this is a summary. यही आप याद कर लें तो बहुत है. Antigen आएगा, it will activate a B cell. The B cell in response to the activation will develop into something called a plasma cell. Now this is very important. Plasma cells will secrete antibodies. Plasma cells क्या है? Plasma cells are activated B cells. Let me write that down. Plasma cells are activated B cells. And how did you activate them? By the antigen. Plasma cells secrete antibodies. Antibodies called cause agglutination. ठीक है? B cell response समझ आ गया? Agglutination occurs in failed blood transfusions. Now see, agglutination is simply clumping. It does not only happen to bacteria. Agglutination, antibodies कोई भी उस चीज को agglutinate कर देंगे, which is a threat. अगर वो एक, let's say failed blood transfusion में क्या होता है, that sugar that is present on the blood cell, that O type carbohydrate या A type carbohydrate, अगर वो गलत टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आ गया, तो दैट विल फंक्शन एज एन एंटीजन. तो वो उस एंटीजन को एग्लूटिनेट कर देगी, मतलब क्लम्पिंग हो जाएगी बेसिकली. सो एग्लूटिनेशन डज अकर इन फेल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स. यस, it is not just a response to germs, it is also a response to anything that has gone wrong. I'm glad you pointed this out. So let's talk about cell-mediated immunity. Now, cell-mediated immunity is brought about by T cells, ठीक है? And यहाँ पे infected body cells and abnormal cells. Infected body cells, especially viruses,
because viruses can escape humoral immunity by hiding within the host cell. Now, it is easier for antibodies to target bacteria specifically because bacteria, they're larger in size, and if they're moving around in the blood, if they're moving around in the body, तो बहुत आराम से antibodies उनको पकड़ सकती हैं. But viruses are tricky. Viruses जाके foreign host cells को infect कर लेते हैं, and it is difficult for antibodies. Antibodies cannot bind to host cells. Antibodies can only attack free antigens. Viruses are not free antigens. Viruses जाके अगर host cell में बैठ जाएंगे तो they can escape humoral immunity. So T cells are required. This is why we need the T cell response. Let me take you through the notes now. So, cell-mediated immunity is provided by a type of lymphocyte called the T cells. They provide immunity by destroying the body's infected cells and abnormal cells. Important in वही वाली बात, which I've already mentioned. Now, here's what you need to know. There are different types of T cells which perform different functions, लेकिन सब cell-mediated immunity के अंदर आता है. So you have helper T cells, and इनका काम literally help करना होता है. Why? Because they're coordinating the activities of all the components of the immune system. Think of it as the project leader. जितने भी immune cells हैं ना, whether it is your macrophages, whether it is the antigen presenting cells, the B cells, बाकी T cells, ये इन सबको manage करता है. It manages everyone. It makes sure कि proper coordination रहे आपस में immune cells के बीच में. So it's a very important function, helper T cells का. Then you have cytotoxic T cells. Cytotoxic, cyto means cell, right? So in some way, they're going to do something drastic. कुछ ना कुछ dramatic काम करेंगे ये. And what they do is कि they attach to target cells, they secrete chemicals which make holes in them, causing lysis. They're very similar to natural killer cells इस तरह से. वो वही वाला काम करेंगे जो natural killer cells कर रहे थे. Secrete proteins that will cause the entire cell to fall apart. Then you have memory T cells. They remember the antigen so that quicker and more effective response is given in case of reinfection. Okay, now I actually forgot to mention this before. मैंने यहाँ पे नहीं लिखा. But ये जो memory cells वाली बात है ना, this is also यहाँ पे भी applicable है. Some B cells become memory cells. And remember the antigen. ठीक है, अभी just remember this कि कुछ B cells भी memory cells बन जाते हैं. यहाँ पे तो T cells के लिए लिखा हुआ है ना सिर्फ, तो B cells भी memory cells होते हैं. They remember the antigen so that quicker and more effective response can be given in case of a reinfection. Suppressor T cells. They will shut off the immune response after the infection is over. So like when the entire when the threat is over, तो ये immune response को बोलेंगे कि बस अब बंद हो जाओ, वरना you will start causing harm to the normal cells of the body. तो इसीलिए suppressor T cells are also important. बस इसमें मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, इतना is sufficient. Any problems in understanding adaptive immunity? Whether it's B cell immunity or T cell immunity? Okay, great. So we're actually done with a significant chunk. अब हमें जो करना है, so I've explained this that there are different types of T cells which work in coordination, and T cells are also activated by the antigen binding to receptors. I've explained this. Now this is what you need to know. Now there is something called MHC proteins, या major histocompatibility complex. Let's see what that is. They are proteins that function as badges or flags or markers of identity. ठीक है, एक तरह से कोई ID card होगा या कुछ भी होगा, a sort of marker of identity which immune cells can recognize. And after recognizing, the immune cells will behave in an appropriate manner. Now, let me be a bit more specific. They are the body's own self markers एक तरह से. They are important ताकि immune cells को पता चले कि हमें किस cell को attack करना है, किस cell को हमें छोड़ना है,
कौन हमारा दोस्त है and कौन हमारा दुश्मन है. That's all. These are simply identity markers. So let's say in a battlefield, if Pakistan and India go to war, Allah na kare, so we know, okay, our soldiers would be wearing a certain uniform and the Indian soldiers would be wearing a certain uniform, right? So if someone were to be on a battlefield, they would know, okay, who is our enemy and who is our, like, who's the friend and who's the enemy. So इसी तरह से the MHC complex has a similar function. Now there are two types. There is the MHC class 1, which is present. Now you need to remember these names. इसका और कोई तरीका नहीं है. I'm trying to tell it like a story so that it sticks, but there's a lot. अब ये याद रखने वाली चीज़ें. They're present on the surface of all the nucleated cells of the body. All the nucleated cells का मतलब ये है कि RBCs पे नहीं मिलेंगे और प्लेटलेट्स पे भी मुश्किल से मिलेंगे, because platelets are fragments of cells, they are not cells, right? So RBCs and platelets में MHC class 1 will probably not be found. And then MHC class 2 is present on the surface of immune cells, only immune cells, whether it's macrophages or T cells or B cells. Now I always forget, even now मुझे याद नहीं है कि कौन सा class 1 किस पे होगा, class 2 किस पे होगा. So let's come up with a method to remember this. सही है. तो class 1 को we can say कि it is called first class. ठीक है. Let me change color pen का. So MHC class 1, this is first class. And if something is first class, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छी है, right? अब if they're present on all the nucleated cells, तो this is a very, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि they're present on all nucleated cells, तो ये first class MHC है. So that is one way you can remember. और class 2 वो है जो सिर्फ immune cells पे present है. You know, it's like second class, not that nice. So this is like funny, but I think it will help you remember. ये समझ आ गया? Great. So MHC भी मैंने बता दिया. Now what's left? The primary and the secondary response. Let's go back to the notes. So we can read this. MHC molecules combine with antigen fragments and display them on the cell surface so that T cells can recognize the antigen and give an appropriate response. Cytotoxic T cells can recognize a complex of antigen fragment and MHC1, and helper T cells can recognize a complex of antigen fragment and MHC2. ये मैं जरा सा बताती हूँ. See, कहा कि cytotoxic T cells, इनका फंक्शन क्या था? They were destroying virally infected cells. जो सेल खराब हो गया है वो उस सेल को आइडेंटिफाई करके they were simply lysing those cells. ठीक है. अब the thing is कि एक virally infected cell, ठीक है, virally infected cell के ऊपर is this should be a host cell, right? है तो ये host cell. तो अगर ये host cell है and it is not an immune cell, तो इस पर कौन सा MHC present होना चाहिए? 1 या 2? एक वायरली इन्फेक्टेड होस्ट सेल के ऊपर कौन सा MHC प्रेजेंट होना चाहिए? Can someone tell me? No, not 2. Not 2, not 2, not 2. उसमें वायरस आके बैठ गया, yes, बट है तो वो अपना ना. वो खराब हो गया तो क्या हुआ? वो था तो अपना ना. तो अपने सेल पे तो हमेशा MHC1 होता है. Does that make sense? ये समझ आया कि MHC2 क्यों नहीं होगा एक वायरली इन्फेक्टेड सेल के ऊपर? Huzaifa, Atif and Fiza, all of you who said 2, I want you to, you didn't understand this? Okay, let me add this as a separate slide and I'll explain it. मैं दोबारा बताती हूँ. So I told you अभी कि cytotoxic T cells होते हैं. And cytotoxic T cells क्या करते हैं? They will kill virally infected cells. बल्कि एक काम करते हैं, let's just say they kill abnormal cells. They kill abnormal cells of the body. Abnormal cells of the body. ठीक है.
ये abnormal cells can be either those that were infected by a virus, या तो इनको वायरस इनके अंदर आ गया, वायरली इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं abnormal cells, या ये वो होंगे जो ये कैंसर सेल्स हैं, और दे कैन बी कैंसर सेल्स. कैंसर सेल्स की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, we're just going to stick to the basics. ठीक है. वायरली इन्फेक्टेड, एक वायरली इन्फेक्टेड सेल अगर उसके अंदर आके वायरस बैठ गया तो है तो ये अपना होस्ट ही ना. एक नॉर्मल बॉडी सेल के ऊपर कौन सा MHC होना चाहिए? नाउ टेल मी. 1, राइट. अलीजा इज राइट. इम्यून सेल्स पर 2 होगा. एग्जैक्टली इम्यून सेल्स पर 2 होगा, लेकिन एक नॉर्मल बॉडी सेल है. लेट्स से कि मेरा एक लंग का सेल है जिसमें कोविड-19 वायरस आके बैठ गया, तो वो लंग का सेल कोई इम्यून सेल तो नहीं है. that lung cell is a normal cell of the body that was unfortunate enough to get infected by a virus. Now that cell should have MHC1 on its surface. ये समझ आई बात? हुजैफा, you said it wasn't clear before. I hope अब समझ आ गया होगा. हुजैफा, आतिफ, नबीहा and फिजा, whoever said ठीक है. Right, now we can move on. ठीक है, तो इसके ऊपर होगा MHC1. If you understand it logically इस तरह से ना, तो you can get many questions right. अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं पेपर में. तो MHC1 को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल. ठीक है. Now what was the second part? Helper T cells can recognize a complex of antigen fragment and MHC2 complex. ये नोट से याद नहीं होने वाला, ये ऐसे ही याद होगा इसमें. अब मैंने कहा कि इम्यून सेल में हेल्पर टी सेल्स आर द प्रोजेक्ट मैनेजर्स. ठीक है. दे मैनेज अदर इम्यून सेल्स. अगर इनका वास्ता बाकी इम्यून सेल से है तो ये कौन सा MHC रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? लॉजिकल आंसर 2. सबको समझ आया कि why 2? यस, बिकॉज वी नो कि इम्यून सेल्स के ऊपर MHC2 होता है, तो अगर हेल्पर टी सेल्स का काम ही इन्हीं को मैनेज करना है तो भाई वो रिकॉग्नाइज भी MHC2 को करेंगे ना. मेक सेंस? एंड देन आई ऑल्सो गेव यू अ निमोनिक कि MHC1 इज फर्स्ट क्लास, और जो भी चीज़ फर्स्ट क्लास होती है वो अच्छा काम करती है. एंड द थिंग इज कि MHC1 सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स पे होगा. ठीक है. ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स. ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स का मतलब है वो इम्यून सेल्स के ऊपर भी होगा, बिकॉज इवन इम्यून सेल्स हैव न्यूक्लियाई, राइट? सो दिस मीन्स बॉडी सेल्स, नॉर्मल बॉडी सेल्स, या नॉर्मल नहीं, जस्ट द इम्यून सेल्स पे तो होगा ही. ठीक है. बट MHC2 इज अ बिट स्पेशल. इट इज प्रेजेंट ओनली ऑन इम्यून सेल्स. अगर लॉजिक नहीं समझ आई, जस्ट रट्टाफाई दिस. ठीक है. सो आई होप MHC कॉम्प्लेक्स सबको समझ आ गया. MHC समझ आ गया? एनी क्वेश्चंस? ठीक है. नाउ वी कैन डू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स एंड आगे, एंड वी आर जस्ट एंडिंग इम्यूनिटी. फिर इसके बाद गैसेस एक्सचेंज और उसमें आएंगे. सो एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ये तो बल्कि जरा ऑर्डर में चलता है. Let's go to this primary response and secondary response. So I told you that the adaptive response is specific. ठीक है. ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाली जो बात हो रही है ना, दिस इज हैपनिंग फॉर योर एडेप्टिव रिस्पॉन्स. इनेट इम्यून रिस्पॉन्स तो कोई भी पैथोजन जितनी दफ़ा भी आए उसने काम एक ही करना है. वो स्किन से भी गुजरेगा, वो केमिकल बैरियर्स भी क्रॉस करेगा, वो मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स भी उसके पीछे लग जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी आ जाएंगे. वो इट इज़ गोइंग टू वर्क द सेम नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स द सेम पैथोजन कम्स, या कोई भी पैथोजन आता है उसने वही काम करना है. अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स विल बी डिफरेंट फॉर एवरी पैथोजन. So when an infection occurs for the first time,
So जब 2020 में COVID-19 आया था and the first ever COVID patient, the immune response that they developed would have been the primary immune response क्योंकि वो सबसे पहले आया when an infection occurs for the first time. And it is a slower response. क्यों? Because obviously कोई भी चीज़ पहली दफ़ा हो रही है, it is a slow response and takes about 5 to 10 days to produce its maximum effect. ठीक है, बस इतना याद रखना है. And then secondary immune response, it is the response of the immune system to a reinfection. Now let's say कि that COVID patient 2020 में उनको हुआ and then वो recover कर गए, but 2021 में they were reinfected, उनको दोबारा हो गया. अब जब दोबारा इन्फेक्शन हुआ तो this response would be quicker because of memory cells, because of something called immunological memory. So you would have memory B cells and memory T cells which remember the antigen. And because they remember the antigen, they can produce antibodies much faster and they can also do cell mediated immunity much faster. तो ये 3 से 5 दिन लगेंगे इसमें, 3 to 5, और उसमें लग रहे थे 5 to 10. Now you see 10 days, अब टाइम हाफ हो गया. इधर प्राइमरी रिस्पॉन्स से लेकर सेकेंडरी रिस्पॉन्स तक टाइम हाफ हो गया. So there's actually a graph that I wanted to show you. I think I have it here. Where do I have it? End में. Yeah. So you can see the specificity, blah blah. छोड़ दो. ये देखो. So you have time on the x-axis and you have antibody concentration on the y-axis. So because it says antibodies, we know कि हम T cell immunity measure नहीं कर रहे हैं इसमें, हम B cell immunity देख रहे हैं. लेकिन बात एक ही है, दोनों adaptive response तो है ना. तो हम देख रहे हैं कि पहली दफ़ा एंटीजन का जब एक्सपोजर हुआ, सही है, तो द प्राइमरी, ये जो ब्लू में जो ग्राफ है, ब्लू इज प्राइमरी एंड रेड इज सेकेंडरी. सो जस्ट पे अटेंशन टू द ग्राफ. You the person was exposed to the antigen for the first time. इधर कितने टाइम लगे? अप्रोक्सीमेटली 5 days या 6 days लगे for antibody production to start. ठीक है, ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू हुई, मैक्सिमम हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन क्लियर हुआ, एंटीबॉडीज का लेवल कम हो गया, इन्फेक्शन ठीक हो गया. अब क्या हुआ? एट डे 28 दोबारा इन्फेक्शन हुआ, एंटीजन ए दोबारा से आ गया, एंड देन यू कैन सी के द टाइम, दिस टाइम पीरियड यहाँ पे से लेके यहाँ तक, इट हैज शॉर्टेंड. यू कैन सी के इतने टाइम में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कितना स्पाइक कर गया कंपेयर टू आवर प्राइमरी रिस्पॉन्स. सो यू कैन टेल दैट दिस इज मच फास्टर. Now you do not need to understand this whole graph, but I just wanted to tell you that secondary response is faster, and just like try to understand कि जो है ना ग्राफ का मतलब सिर्फ यही है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में टाइम लगता है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज रिलेटिवली क्विकर. बस इतनी सी बात है. It's okay if you don't understand the graph, you can completely forget it. Was that clear? Memory B cells and memory T cells have no difference in function. They would have a difference in function. B cells have a different function from T cells, right? So they would have a difference in function. Memory B cells का काम होगा कि वो antibody production को facilitate करेंगे in case of a reinfection. और memory T cells का काम ये होगा कि in case of a reinfection, the T cell response would be more enhanced because of these memory T cells. So there are different types of cells, but memory वाला वर्ड लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि they will remember the antigen. Is that making sense, Elise? Like fundamentally they're doing different things. Like B cells will produce antibodies and T cells will do something else. So they do have a difference in function. Elise, I'm waiting for a response. Yeah, okay, good. ठीक है. So that was primary versus secondary. Now this is important. ये active और passive, इसकी examples बहुत confusing हो जाती हैं sometimes. So let's see. Active immunity develops as a result of a person's own immune system
own immune response to antigens. In other words, the body produces its own antibodies. Now, this is a good definition. The body will produce its own antibodies. ठीक है? तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है? The body will be producing antibodies in response to the antigen. Now, it can be of two types. It can be natural active, or it can be artificial active. I think I will have to go back to the OneNote page. So, adaptive को एक तरह से और भी classify कर सकते हैं, and that can be active and it can be passive. Okay? Active में you make your own antibodies. And passive में you benefit from someone else's antibodies. Right? So what happens is, how would you make your own antibodies? In order to make antibodies, you first need to encounter the antigen. Encounter the antigen first. Encounter करने के दो तरीके हैं. It can be natural or it can be artificial. Natural का मतलब है कि go and get the virus. ठीक है? Expose yourself to the virus and get the infection. Get infected. और artificial का मतलब है get vaccinated. Because what is a vaccine? What is inside a vaccine? A vaccine contains बिल्कुल ही dead बीमार antigens, dead बीमार viruses, ठीक है, which will not be able to produce a life-threatening infection. But what they will do is, कि in their weakened form, they will cause the body to produce an immune response. And immune response का मतलब क्या हुआ? Antibodies. तो artificial इसलिए कहते हैं क्योंकि ये inject कर रहे हैं ना अपने अंदर, inject कर रहे हैं, और natural इसलिए कह रहे हैं क्योंकि like this is nothing new to the body. Nothing new. Conventional, traditional तरीका. ये बात समझ आई? Active, natural active immunity and artificial active immunity. Were you able to understand this? Because इसके जो questions आते हैं, इसमें बहुत logical questions बनते हैं. Okay, great. So let's talk about passive immunity. ठीक है? Passive में क्या है? It develops due to ready-made antibodies. Now I wrote के you benefit from someone else's antibodies, so you know they're ready-made, transferred from another person or even an animal, but let's not talk about it. Okay? From another person. And passive immunity can also be natural or artificial. Natural का मतलब क्या है कि the body, ये traditional तरीका है, ठीक है? Nothing new. और artificial का मतलब है कि you are injecting it. Natural passive immunity में there is a direct transfer of antibodies from one person to another of the same species but without injection. This is what I mean by traditional. I'll highlight it. There is a transfer from one person to another of the same species without an injection. Okay. For example, a mother passes her antibodies to the baby through the placenta or breast milk. So yeah, this is like the classic example. Mother passing antibodies to the baby through placenta or breast milk. This is the classic example of natural passive immunity. यहाँ पे इंजेक्ट नहीं हो रही, बेबी के पास जो एंटीबॉडीज आ रही हैं फ्रॉम द मदर, दोज आर नॉट कमिंग वाया एन इंजेक्शन, दे आर कमिंग थ्रू द प्लेसेंटा और फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क. In artificial passive immunity, antibodies formed in one individual are extracted and then injected into another person who may or may not be of the same species. For example, rabies is treated by injecting antibodies extracted from humans who have been vaccinated against rabies. सही है? तो जिन लोगों को rabies हो जाता है, तो rabies
and then as a result of that infection they develop antibodies. ठीक है, तो जो रेबीज वाली एंटीबॉडीज होती हैं वो फिर एक दूसरे इंसान को ट्रांसफर की जा सकती हैं, एंड इन दैट वे दे विल बी वैक्सीनेटेड. नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम आर्टिफिशियल एक्टिव. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रहे हैं, वहां पे हम एंटीजन दे रहे हैं. एंटीजन विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडी, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज दे रहे हैं. तो आई होप ये बात समझ आ गई सबको कि नेचुरल पैसिव कौन सी है और आर्टिफिशियल पैसिव कौन सी है. आई होप देयर आरंट एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. ग्रेट. अब क्या रह गया इसमें? So there's a small paragraph on immunization. It is the process of inducing immunity as a preventive measure against infectious diseases. It is achieved through vaccination. Many diseases such as smallpox have been eliminated through immunization. Other diseases such as typhoid, tuberculosis, etc. have been greatly controlled. So immunization is like very important, and we know कि अगर vaccines नहीं आती तो COVID-19 pandemic नहीं खत्म होता. So these are differences. You can go through these tables if you want quick revision. Innate immune system, I'll go through this. ठीक है? Innate is non-specific and gives ये general है, general protection. Adaptive is specific to antigen. I've talked about this. Innate is present at birth. Every baby that is born will be present with innate immunity. लेकिन adaptive immunity जो होती है वक्त के साथ साथ develop होती है as the baby will encounter antigens through different sources. जैसे जैसे वो बड़ा होगा it will encounter different antigens, और in antigens के against it will आहिस्ता आहिस्ता develop adaptive immunity. So it is acquired. This is why it is also called acquired, and innate is called inborn. Innate does not require previous exposure to the antigen, and adaptive requires previous exposure. Innate does not generate immunological memory. Innate immune response को कुछ याद नहीं रहता. ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन आए बार बार 10 दफ़ा आए कि एक दफ़ा आए उसने एक ही काम करना है. So no memory at all. Adaptive generates immunological memory. Innate immune response forms the first and second line of defense, and this forms the third line of defense. So बस ये differences थे इनमें. Okay, I would like to discuss this a little. ये cytokines का discuss भी कुछ नहीं करना, बस बता रही हूँ मैं. So cytokines या lymphokines, these are hormones of the immune system. क्या hormones क्या है? Chemical signals है ना, chemical signals हैं. तो इनको hormones कहने में कोई बुरी बात तो नहीं है ना, इनका भी right है. These are hormones of the immune system. They are secreted by immune cells to regulate and coordinate the immune responses. अब मजे की बात है कि we already know what these are. Interferons मैंने बताया था, ये भी cytokines की type है. Interleukins अभी मैंने बताया था, वो भी cytokines की types हैं. So they're basically the chemical signals that are part of the immune system. इनको cytokines कहते हैं, and they're hormones of the immune system. So if you get a question, if you get a bakwas MCQ that says के which of these is a cytokine, which of these is the hormone of the immune system, A, cytokine, B, interferon, C, complement, और डी में क्या डालना है? इंटरल्यूकिन डाल देते हैं, लाइसोजाइम डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं. ठीक है, तो ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन हो गया. यहाँ लिखा हुआ है, खुद ही लिखा हुआ है साइटोकाइन, लेकिन अगर ये पीएमसी जैसा गंदा क्वेश्चन होगा तो वो उसमें लिख देंगे ऑल ऑफ द अबव एंड दे वुड रिप्लेस दिस. ठीक है, लेट मी मेक सम चेंजेस एंड टेल यू व्हाट अ पीएमसी क्वेश्चन माइट लुक लाइक. अब तो थैंक गॉड पीएमसी नहीं है, बट व्हेन इट वाज हेल. Let's see, all of the above, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटरल्यूकिन. Now you tell me, किताब में लिखते हैं साइटोकाइंस आर हार्मोन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, और इनकी आंसर की बनेगी पता नहीं क्या. So you can see why this might be a problem. So all of the above should be the answer, क्योंकि साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स, they all mean the same thing. तो इन सबको ही हार्मोन्स कहा जा सकता है.
So ये मैंने बता दिया, B cells, T cells. Okay, so we're actually done. We're done with immunity. How much time do we have left? I wanted to cover this by 9:30 और 10:30 तक करना पड़ेगा extend हमें for gaseous exchange and nutrition. I got a question related to cytokine and confused it with cytokinin. No, that's the exact sort of यही होता है. When you have a huge syllabus to cover, you can confuse basic things like this. Cytokinin. I don't even remember plant hormones of science. हाँ, cytokinin was that hormone na, which was enhancing cell division in plants. So cytokinin is a plant hormone. Cytokine is a hormone of the immune system. एक बहुत अच्छी बात याद दिलाई है. Let me write it. Where do I write it? कहीं space मिल जाए. यहाँ डाल देती हूँ. I'll change color so that it's prominent. Cytokine immune hormone है. Immune system का hormone है. Now I need to find another space. यहाँ लिख देते हैं. Cytokinin is a plant hormone. Yeah. So I hope all's clear for immunity. Can we say natural passive immunity is also a type of innate immunity because both are in our body from birth? No, no, no. That is not how you define innate immunity. See, innate immunity is supposed to be non-specific. Natural passive immunity में भी antibody आ रही है, and antibodies are not part of the innate immune system. Antibodies are part of the adaptive system. Innate immune system और adaptive का main difference ये है कि एक बहुत specific है. Adaptive is a different response for every sort of threat. हर antibody दूसरी antibody से different है. लेकिन innate immune response में the same response is given by the body for every type of invader. So this would be incorrect. That is a misconception. You cannot say that natural passive immunity is innate immunity. Huzaifa Khan. Yeah. Any other questions? Okay. I think हो गया. सही है. So that's immunity covered. अब हमें करना है digestive system और gases exchange. Now the thing is कि इन दोनों chapters में इतना ज़्यादा concepts नहीं है. Why? Because digestion के अंदर you have to basically remember a list of enzymes, and gaseous exchange के अंदर भी there is not a lot. It is very descriptive, and description तो if you like, if you were to cover it from the notes तो आराम से समझ आ जाएगा. It is not like immunity के पूरे concepts build करने or anything. It is something that you've been doing since a lot of time. Gaseous exchange and digestion. That's class 6 से ही कर रहे होते हैं. So I'll just walk you through the notes and I'll tell you what to focus on and what you should be doing from the book. So let's start with nutrition first. थोड़ा बहुत concept है nutrition का introduction वाले part में. So I'll take you through that. So first, let's define nutrition. It is the process by which living organisms obtain necessary substances required for their metabolism, growth, and repair from the environment. So yeah. So what it means is that metabolism, growth, and repair. These are actually very important terms. Metabolism का मतलब है all the reactions that are happening within the cell, biochemical reactions of the cell. Think of a few biochemical reactions. Krebs cycle, glycolysis. ये सब कौन चलाएगा? ये सब मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है. Growth and repair, right? Think of your skin cells. They're being replaced very frequently. You shed off new skin cells, and then there are new skin cells which will replace those damaged cells. या जो cells lost हो रहे हैं उनको replace करने के लिए नए cells चाहिए. To growth and repair. So this is very important. And to do all of this, you need energy. And that energy comes from food. And how you get that food is nutrition. Okay? Nutrition is how you obtain food. How
do you obtain food and nutrients? इस process को nutrition बोलते हैं. And what are nutrients? That provide energy and material for metabolism and growth. So yeah, एनर्जी तो आ रही है, कार्बोहाइड्रेट से आ रही है, प्रोटीन से भी आती है, फैट से भी आती है, बट न्यूट्रिशन में और भी चीज़ें आती हैं मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ के लिए. लेट्स से विटामिन्स एंड मिनरल्स, these are all nutrients, you need them. So let's talk about the types of nutrition. Types of nutrition. Nutrition can be autotrophic or it can be heterotrophic. Autotrophic का मतलब है कि the organism makes its own food. Autotrophic दो तरह का है, photosynthetic and chemotrophic. ठीक है, so let me explain this. What is meant by photosynthetic and chemotrophic? So autotrophic nutrition is a type of nutrition in which organisms synthesize complex food material, organic molecules, from simple inorganic molecules using the energy of light या फिर chemical energy. ठीक है, एनर्जी सोर्स का फर्क आ जाता है फोटोट्रॉफिक में और कीमोट्रॉफिक में. ठीक है, काम क्या हो रहा है ऑटोट्रॉफिक में? बेसिकली द ऑर्गेनिज्म विल टेक इनऑर्गेनिक थिंग्स like CO2 or it could be anything else, CO2 or whatever, and it will turn it into organic food. And how does it do that? It needs energy. ये एनर्जी की टू सोर्सेज हैं, या तो लाइट एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी. अगर लाइट एनर्जी यूज हो रही है टू टर्न दिस इनऑर्गेनिक स्टफ इनटू ऑर्गेनिक फूड, देन वी कॉल इट फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट? एंड ये कौन करता है? प्लांट्स, एल्गी, सम बैक्टीरिया, देयर फोटोट्रॉफिक. ठीक है, and phototrophic bacteria. Now, photosynthesis in plants and algae is different from photosynthesis in bacteria. So let's see. Plants and algae use CO2 and water as raw material. Water is the source of hydrogen. Therefore, they release oxygen as a byproduct. सो प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रही है. क्यों? क्योंकि वाटर इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन. व्हाई डू यू नीड हाइड्रोजन? कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए हाइड्रोजन तो चाहिए ना, फॉर कार्बोहाइड्रेट. chlorophyll A, chlorophyll B and some other pigments are used for absorption of solar energy. Pigments, photosynthesis कोई सा भी हो, प्लांट्स में हो, एल्गी में हो, बैक्टीरिया में हो, पिगमेंट्स चाहिए. प्लांट्स और एल्गी में जो पिगमेंट्स हैं दोज आर क्लोरोफिल्स. बैक्टीरिया में जो चाहिए विल सी दिस अभी इन अ व्हाइल. नाउ प्लांट्स एंड एल्गी में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है दैट विल रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, और बैक्टीरिया में समथिंग एल्स विल बी रिलीज्ड. लेट्स सी. नाउ ये फोटोसिंथेसिस हम एक्चुअली कवर कर चुके हैं बायो एनर्जेटिक्स में. ठीक है, एंड दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि क्लोरोफिल का फॉर्मूला याद कर लेना प्लीज. क्लोरोफिल फॉर्मूला दिस इज गिवन ये बायो एनर्जेटिक्स में. chlorophyll A का and chlorophyll B का formula, do remember, like do learn it. So photosynthesis in bacteria. Now you'll have to learn these names: green sulfur bacteria and purple sulfur bacteria. ठीक है, they use hydrogen sulfide. वहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन सोर्स, वहाँ पे पानी थी. यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है. H2S is the source of hydrogen. Therefore, they give sulfur as a byproduct. Pigments क्या हैं? Chlorobium chlorophyll present in green sulfur bacteria and bacteriochlorophyll present in purple. Green क्या हुआ? कलर चेंज नहीं किया. ग्रीन में होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल एंड इसमें
पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, सही है। You need to remember this, and you also need to remember this equation. See, you're already familiar with this equation. ये वाला, ये तो पता है, ठीक है। This is different. You have hydrogen sulfide, you have light, and you have pigments. Pigment क्या हो सकता है? Bacterio chlorophyll हो सकता है, chlorobium chlorophyll हो सकता है. Now, this is simply a general way to represent carbohydrates. Water निकल रहा है, water वहाँ भी निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर है, बस इतना डिफरेंस है। ये हो गया फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एल्गी एंड ऑल्सो इन बैक्टीरिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम इतना समझने में? Please explain the difference between renin enzyme and renin hormone as it is written with incorrect and opposite spellings in STB. Okay, remind me अभी या फिर मुझे WhatsApp कर देना. I'll send a voice note on the group explaining this. अभी अगर टाइम बचता तो I'll explain it in class only. But for now, tell me ये समझ आ गई? Photosynthetic heterotrophs, autotrophs, sorry, not heterotrophs. So next, let's do chemoautotrophs. अब यहाँ पे क्या है? The chemical energy required to make organic food from inorganic stuff comes from chemical energy. सही है? Chemical energy. And how do you get this chemical energy? From the oxidation of inorganic substances such as ammonia, nitrates, etc. Right? So इनकी oxidation की वजह से energy release होगी. This energy is chemical energy. This chemical energy will be used in order to produce organic food. इसकी एग्जाम्पल में दी हुई है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया oxidize ammonia, ammonium or atmospheric nitrogen to form nitrites and nitrates and get energy. You can remember these equations. ये तो हो गया autotrophic nutrition. Now let's come to heterotrophic. Heterotrophic nutrition is of three types. It can be holozoic, it can be saprotrophic, or it can be parasitic. Okay? इस पे थोड़ी सी बात करते हैं. In animals, nutrition is heterotrophic, but heterotrophic nutrition is also in other types of organisms, so not just animals. It is a type of nutrition in which organisms feed directly on other organisms to obtain complex, ready-made organic food. वहाँ पे क्या था? You were making organic food from inorganic materials, and यहाँ पे you are getting complex, ready-made food. You don't have to do much मेहनत. Thus, their carbon source is organic. Right? So let's see holozoic nutrition. Holozoic में क्या होता है? You take complex, non-diffusible food such as a chicken leg. ठीक है? या अगर एक टाइगर है तो पूरा का पूरा डियर खा लिया उसने. ठीक है? Complex, non-diffusible food is taken and then digested to form simple diffusible molecules, right? So let's say you're taking your slice of bread, that is your complex non-diffusible food, and then you turn it into glucose, chote glucose molecules that can dissolve in the blood through the process of digestion. This is holozoic nutrition, right? An organism ingests another organism as a whole or in pieces. It is present in all free living animals. And there are different types of holozoic animals, just like herbivores, carnivores, omnivores, predators, detritivores, filter feeders, fluid feeders. There's an entire list. Main idea is कि digestion करना पड़ रहा है. पहले आप खाते हैं, फिर आप digest करते हैं, and then you will absorb the result of that digestion. That is holozoic.
देन देयर इज अनदर टाइप दैट इज सैप्रोट्रॉफिक या डीकम्पोजर्स. अब ये क्या करते हैं? आई थिंक आई हैव मेड अ स्लाइड ऑन दिस. Yeah. So saprotrophs are actually bacteria and fungi, and what they do is they release extracellular digestive enzymes to decompose dead, decaying organic matter. Okay? And they're also called decomposers. Then detritivores क्या होते हैं? They are organisms that ingest. मतलब ये खाते हैं. यहाँ पे क्या कर रहे हैं? Saprotrophs क्या कर रहे हैं? There's a difference between saprotrophs and detritivores. Saprotrophs release enzymes to decompose the dead organic matter, और detritivores क्या करते हैं? वो actually खा जाते हैं. जैसे earthworms हैं या wood lice, they feed on stuff like fallen leaves and dead animals और ये सब, तो वो उसको actually खाते हैं. और saprotrophs क्या करेंगे? वो इस पे अपने enzymes फेंक देंगे और digest कर लेंगे. So there is a difference. And then the third type of heterotrophic nutrition is parasitic, and we know parasitic का मतलब है कि one organism will be causing harm to another organism and उससे फायदा भी ले रहा है. मतलब फूड अपना कहीं और से ले रहा है और जिस ऑर्गेनिज्म से ले रहा है उसको नुकसान भी पहुंचा रहा है. दैट्स पैरासिटिक न्यूट्रिशन. गिव मी 2 minutes please, I'll get back to you. Yeah. So that was the types. Now I want to talk about heterotrophic plants. मैं plant nutrition पे ज़रा ज़्यादा focus कर रही हूँ क्योंकि जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने की. लेकिन ये जो थोड़ी सी चीज़ है ना, you will find it helpful if I can sort of explain this to you. So heterotrophic plants तीन types के हैं. There are carnivorous plants, there are saprophytic plants, and there are parasitic plants. Now you might wonder कि plants को ऐसी क्या ज़रूरत है heterotrophic nutrition की? ये तो अपना खाना ठीक ठाक बना सकते हैं. But nevertheless, heterotrophic plants do exist because there are different situations. For instance, carnivorous plants का एक मसला होता है कि they can make carbohydrates easily by photosynthesis, but they cannot make proteins because they grow in soil जहाँ से nitrogen लेना बहुत मुश्किल है. And we know कि in order to make proteins you need nitrogen. अब उनकी nitrogen source fulfill करने के लिए they have to actually eat insects and small bugs. कोई भी छोटा सा बेचारा शिकार जिनको मिल जाए जिसको वो खा के अपनी प्रोटीन सोर्स फुलफिल कर सकते हैं, प्रोटीन नीड्स फुलफिल कर सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाई कार्निवरस प्लांट्स एग्जिस्ट. एंड लेट मी डिस्कस दिस नाउ फ्रॉम द नोट्स. So carnivorous plants are also called insectivorous plants. I've talked about how they grow in nitrogen deficient soil. Now you need to remember these names. इनकी descriptions हैं यहाँ पे notes में descriptions given है. So you can read this from the notes, but you also have to look at their pictures. इनकी pictures given है book में, especially in Sindh, and I think they're also given in Punjab. So make sure that you go through the diagrams, you go through the pictures carefully. एंड ये बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. अब ये बस लर्न करने की चीज़ है, कुछ और है नहीं करने को इसमें. बट मेक श्योर यू डू दिस वेल क्योंकि ये दिया हुआ है PMDC ऑब्जेक्टिव्स में. एंड देन यू हैव saprophytic plants. नाउ आई टॉक्ड अबाउट saprophytic bacteria and fungi, and what they were doing was कि they were releasing extracellular enzymes and onto dead organic matter, और उस dead organic matter को digest करके उससे न्यूट्रिशन absorb कर रहे थे. अब ये क्या करते हैं? saprophytic plants भी similar काम करते हैं. They will release enzymes, they will digest dead organic matter, and they will absorb the nutrients simply from the soil. So इसकी एक example है ये bird's nest orchid. You can remember this. Then you have parasitic plants. अब parasitic plants भी एक तो दो तरह के होते हैं, stem parasites, root parasites, और हर टाइप के भी
you have a further category. You can have a total stem parasite, you can have a partial stem parasite, you can have a total root parasite and a partial root parasite. So you should be doing this as well. ये भी important है, ये भी दिया हुआ है learning outcomes में. So make sure you're not leaving this. Like ये करना important है. तो plants का फिर mineral nutrition रह गया. अब mineral nutrition में भी go through this. Nitrogen is not a mineral element, but it is included in mineral nutrition because plants absorb nitrogen in the form of nitrates or ammonium salts from the soil. ठीक है. अब nitrogen, we know nitrogen is considered a gas. ठीक है, ये gas है, इसको कोई भी mineral नहीं कहता. लेकिन the thing is कि nitrogen plant इस form में नहीं लेता. Plant लेता है as nitrates, as nitrites and as ammonium salts. ठीक है, ये आते soil से हैं. Because they come from soil, we say कि nitrogen is a nutrient. अब इसमें अगर कोई भी मिनरल की कमी होगी तो यू विल सी सर्टेन डेफिशिएंसी सिम्टम्स, बट इसकी भी एक समरी दी हुई है नीचे. ठीक है, यू कैन जस्ट लर्न दिस इफ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम. जस्ट डू दिस. ये जो लीव्स का कलर है ना ऑफ डिफरेंट, what would happen to leaves in different deficiencies, you can learn this. ये भी इतना भी करके चले जाएंगे तो काफ़ी है. And plant nutrition बस इतना सही है. Then you have nutrition in animals. Nutrition in animals में यही सब है. You know the process, the steps of holozoic nutrition: ingestion, digestion, absorption. We're all familiar with this. Sac-like and tube-like. You can go through this. ठीक है. Then the entire process of digestion, basically, it begins in the oral cavity and physical digestion, chemical digestion. I don't think इसमें कोई problem होना चाहिए. मुझे किसी ने रेनिन और वो रेनिन वाली बात बोली ना, I remember this. I'll get back to it. अच्छा, ये है ना dental formula. Do learn this. Very important. Hair diseases हैं. अब this can be easily covered from notes. And अगर ये notes को समझने में किसी को कोई problem हो, when you're studying on your own, then do let me know and I'll be happy to explain this. अच्छा, ये दिया हुआ है ना nutrition in animals. ये if you have time तो go through this. Amoeba, hydra, planaria, cockroach, ये सब नोट्स को रीड करने में आई डोंट थिंक कोई मसला होगा, बट इफ यू ट्राइंग टू कवर दिस फ्रॉम द बुक तो बहुत ही मसला होगा, बिकॉज दिस इज गिवन इन अ वेरी बैड फॉर्मेट बुक के अंदर. नोट्स ज़रा वेल एक्सप्लेन्ड है, तो अगर नोट्स समझने में मसला हो देन यू कैन लेट मी नो. वही चीज़ है, दिस इज अ शॉर्टर डिस्क्रिप्शन. लाइक इफ यू वांट दिस इन बुलेट पॉइंट्स तो दिया हुआ है प्लेनेरिया, कॉकरोच वाली चीज़. डिसऑर्डर्स भी बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, नॉट मच एट ऑल. अच्छा हाँ, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये एंडोपैरासाइट्स, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन में रिमेंबर दीज नेम्स सारे. give this a read at least. You should know these names. All the flatworms that are causing different diseases, या जितने भी parasitic worms हैं. So do cover this section. Does anyone have any questions, any objections? कोई मसला? General questions to ask. Can you please explain? What is this? I think you meant something. Elephantiasis का difference. Okay. Okay, so if I remember correctly, you are actually talking about this. Pucheraria. I'm not sure if I'm pronouncing this. और इसको बोलते हैं filarial worm. ये मैंने कल भी कराया था when I was teaching you lymphatics. ठीक है, ये एक nematode है
ये एक नीमाटोड वर्म है, एक राउंड वर्म है, ठीक है। और ये करता ये है कि जब ये इन्फेक्ट करता है तो इट ब्लॉक्स lymphatic vessels, and because it blocks lymphatic vessels, yeah, did I run out of ink? Why is it not working? Wait, give me a minute please to see what's wrong. Just give me 2 minutes. Okay, great. So I don't know, my PDF reader was glitching. ये सुबह भी कर रहा था तंग मुझे, and I had to restart the app. So, okay. So what this worm does is it blocks lymphatic vessels, and I was teaching you yesterday that when lymphatic vessels get blocked, तो lymph का drainage is affected. Now I don't think you should have trouble understanding this क्योंकि मैंने बहुत time लगा के explain किया है, ठीक है? तो lymph drainage is blocked. Lymph drainage जब block होती है तो we know कि tissue fluid accumulates in tissues, and this condition is called edema. Edema produces swelling. ठीक है. अब द थिंग इज कि फिलेरियल वर्म के इन्फेक्शन में एडीमा इतना एक्सेसिव होता है कि द एडीमा रिजल्ट्स इन ह्यूज स्वेलिंग ऑफ द limbs. And I know, I hope you understand what limbs are: hands, feet, legs, the thighs, and to some extent even the lower part of the abdomen, like the scrotum and all of like those areas. So those parts can be swelled to such an extent कि उसका नाम पड़ गया elephantiasis. इतनी swelling हो जाती है कि they would start, like the affected individual would start resembling an elephant. So that is why it is called elephantiasis. The Wuchereria is the worm. This is the worm. And elephantiasis is the condition that develops as a result if someone were to get infected. Whoever asked this, I hope unka question clear ho gaya. Alize Khan. Okay, I'm glad you've understood. Then you asked me about renin and renin, right? So let's see यहाँ पे renin की कौन सी spelling लिखी है. I'm sure it must be the correct spelling. These are accurate. इसमें है renin. ये double N वाला जो renin है ना, this is the digestive enzyme. ठीक है, double N वाला. अब क्या प्रॉब्लम हो गया इसे, renin. ठीक है, इतना बड़ा नहीं सर्कल करना था.
रेनिन. ये रेनिन इज द डाइजेस्टिव एंजाइम. इट डाइजेस्ट मिल्क. वो जो दूसरा वाला रेनिन है ना, वो वेट, since you have asked, I believe I had a slide इस पे. मैंने स्लाइड डाल दी थी लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था. ये है समथिंग कॉल्ड द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, है ना. ये है सिंगल एन वाला रेनिन. रेनिन इज द डाइजेस्टिव एंजाइम. सिंगल एन वाला जो रेनिन है ना, ये दूसरा है. रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है, इट इज फॉर रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर. जस्ट रिमेंबर इतना. एंड in conditions of low blood pressure, low blood volume या dehydration, what happens is कि renin, single end renin, इसकी प्रोडक्शन होती है. एंड what it does is कि एक एंजाइम का प्रीकर्सर है. प्रीकर्सर मतलब एंजाइम का एक इमेच्योर फॉर्म है, एंजियोटेंसिनोजिन. तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है इनटू समथिंग कॉल्ड एंजियोटेंसिन 2. एंजियोटेंसिन 2 will raise the blood pressure. ठीक है. यहाँ पे we had a condition, low blood pressure, low blood volume, dehydration, पानी की कमी है, the blood is thick. The blood is thick, it can't circulate very well, it doesn't circulate with a lot of pressure, therefore blood का pressure low है because of dehydration. रेनिन बढ़ा, रेनिन बना, रेनिन ने एंजियोटेंसिन 2 बनाया. एंजियोटेंसिन 2 will raise blood pressure. कैसे? It will cause aldosterone from adrenal glands to be released. एल्डोस्टेरॉन वाटर सॉल्ट्स की अब्जॉर्प्शन कराएगा किडनी से. तो बेसिकली एंजियोटेंसिन 2 करेगा क्या कि इट विल इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स. इट विल कॉज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी एक्सट्रैक्ट हो वापस. पानी जब वापस आएगा ब्लड में तो ऑब्वियसली ब्लड वॉल्यूम रिस्टोर हो जाएगा एंड ब्लड प्रेशर विल ऑल्सो बी रिस्टोर्ड. दैट इज द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. Now there is an entire diagram to show this. Yeah, so let's see. Blood pressure drops. Blood pressure drops. So sensors in the ये जो है ना GGA, JGA, this is simply a system in your kidneys. ठीक है, it's simply a part in your kidneys. It decreases this. It detects this. ठीक है, किडनीज डिटेक्ट करती हैं ये ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम का कम होने की चीज़. एंड दिस पार्ट इन द किडनीज ये प्रोड्यूस करवाएगा रेनिन. फिर रेनिन अपने बाकी फंक्शंस करेगा. तो जस्ट नो कि रेनिन एंजियोटेंसिन वर्क इन कोऑर्डिनेशन इन ऑर्डर टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, एंड दैट दिस वाला रेनिन इज डिफरेंट फ्रॉम द डाइजेशन वाला रेनिन. Is it really important for the MDCAT? Not at all. She asked, इसीलिए मैं बता रही हूँ. सही है. क्लास खत्म हो गई क्या? नहीं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है. मुझे गैसेस एक्सचेंज का भी थोड़ा ओवरव्यू देना है सो दैट यू कैन कवर इट इफेक्टिवली. न्यूट्रिशन हो गया, अब गैसेस एक्सचेंज रह गया. गैसेस एक्सचेंज भी मैं डेप्थ में नहीं करा रही. आई जस्ट गिव यू अ सरफेस ओवरव्यू. कहाँ गया गैसेस एक्सचेंज? राइट. तो गैसेस एक्सचेंज में यू हैव अ वेरी स्मॉल पोर्शन, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स का. आई थिंक ये नोट्स में नहीं है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स. इट्स इन द बुक दो. आई विल टेल यू व्हाट टू डू फ्रॉम द बुक. क्योंकि शायद एंड में दिया हुआ है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स का. 1 minute. हाँ, यहाँ पे. So gases exchange in plants, very small subtopic. Just remember
दिस लेंटिसल्स वाली बात, बिकॉज इसमें बाकी सब जो है ना इट इज़ जस्ट रेपिटेशन। और एक और चीज़ है इसमें, फोटो रेस्पिरेशन का। फोटो रेस्पिरेशन वॉज ऑलरेडी टॉट इन बायो एनर्जेटिक्स, बट थोड़ा सा ना सिंध की बुक को देख लेना, ये चैप्टर 13 में दिया हुआ है फोटो रेस्पिरेशन का, कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं। सो मेक श्योर यू गो थ्रू दैट, एंड इफ यू हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग मुझे बता देना, आई एक्सप्लेन इट व्हाट्सएप पे। एंड इसमें फिर ये है गैसेस एक्सचेंज में कि not very important. You have the entire human respiratory system. So yeah, like see the diagram alongside, it will all make sense. ये surfactant, just know कि अभी मुझे आज किसी ने पूछा भी था surfactant का question, ठीक है? So what this surfactant does is कि I'm sure you all know what alveoli are. Alveoli are air sacs. These are the areas in the lung जहाँ पे gases exchange actually हो रही है, ठीक है? तो इनका जो इंटरनल सर्फेस है ना, यहाँ पे केमिकल होता है, उस केमिकल को बोलते हैं सर्फैक्टेंट। और सर्फैक्टेंट का पर्पस होता है टू रिड्यूस सरफेस टेंशन। एंड सरफेस टेंशन रिड्यूस इसलिए होती है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा केमिकल ना हो तो एल्व्यूलाई की जो वॉल्स हैं, दोज वॉल्स कैन बी डैमेज, दे विल कोलैप्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज। तो सर्फैक्टेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो सर्फैक्टेंट मैंने बता दिया। अच्छा, अब ये जो है ना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, देयर इज एक्चुअली, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर वन निमोनिक एंड दैट इज दिस, ठीक है? सो द थिंग इज कि डॉक्टर्स आर ऑलवेज टेकिंग डीप ब्रेथ्स बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेस दैट दे हैव, ठीक है? अब यहाँ डी स्टैंड्स फॉर डायफ्राम, आई मेक दिस सुपर क्विक। आर स्टैंड्स फॉर रिलैक्सेस, ई स्टैंड्स फॉर, बल्कि ना ये नोट्स में लिखते हैं, नोट्स में आसानी रहेगी। आ गया न्यूट्रिशन वाला, न्यूट्रिशन के साथ ही मैं गैसेस एक्सचेंज डाल देती हूँ। वेट, I'll add a page. So this is mnemonic for remembering the process of ventilation, process of breathing. So what are the organs involved in breathing? ठीक है, lungs तो involved है ही हैं. Do you have the diaphragm? And then you have the intercostal muscles. You have the internal intercostal muscles, and you have the external intercostal muscles. लेकिन जनरली स्पीकिंग जो एक ही वर्ड यूज हो रहा होता है, दैट इज इंटरकॉस्टल मसल्स, एंड ये एक्सटर्नल वालों को कहते हैं, ठीक है? तो दिस इज अ निमोनिक आई डेवलप्ड बैक इन क्लास 8 व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है? एंड देयर वाज नो अदर वे फॉर मी टू रिमेंबर के कब एक्सहेलेशन में कौन से ऑर्गन को क्या होता है, ठीक है? तो ये है डायफ्राम। तो डायफ्राम रिलैक्सेस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ठीक है? और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है ना, एक्सटर्नल वाले, ये भी रिलैक्स करते हैं ड्यूरिंग अ एक्सहेलेशन। इंटरनल वाले कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज फॉर एक्सहेलेशन एंड द ऑपोजिट वुड होल्ड ट्रू, ऑपोजिट फॉर इनहेलेशन। तो अगर डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है एक्सहेलेशन में तो इनहेल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर इंटरकॉस्टल मसल्स एक्सहेलेशन में रिलैक्स हो रहे हैं तो इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो इफ यू कैन रिमेंबर दिस तो योर प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व। अगर आप सिर्फ ये भी याद करके जाए ना इस चैप्टर में से, तो एटलीस्ट ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है तो हो जाएगा। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट चंक है विच इज दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. This is also important, lung capacities and volumes, ठीक है?
very self-explanatory definitions. Make sure you do the disorders also. And ये जो है ना, in different animals, gases exchange in different animals. So just like in nutrition, uh, do read this from the notes. Sindh and Punjab people especially, read this from the notes, and if you have trouble understanding the notes, let me know on WhatsApp. Transport of gases वाले section का मसला ये है कि you have to remember a lot of percentages, and you do have to remember the percentages क्योंकि पूछते हैं. Remember the percentages. And the thing is कि इसके अंदर जितनी भी information given है, STB और पंजाब फेडरल, सब में अलग अलग बातें हैं, all different. So whatever is given in your book, make sure you learn that. If you're giving the Sindh MCAT, make sure you do Sindh की चीज़. पंजाब को करें तो पंजाब की वैल्यूज, और फेडरल तो फेडरल की वैल्यूज. लाइक वैसे भी सिलेबस में बहुत वेरिएशन है, लेकिन इस चैप्टर, इस वाले सब टॉपिक के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा है. फॉर इंस्टेंस, अब ये है ना कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, तो इसमें बहुत वेरिएशन है. डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं. तो मेक श्योर यू डू द बुक दैट यू आर सपोज टू फॉलो फॉर द MCAT. और इसमें एज सच एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है. एवरीथिंग इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. तो आई डिड नॉट स्पेंड सम मच टाइम. This is not included in federal. What is not included in federal? Nabiha Tahir. ये animals वाली चीज़ is not, I agree. Respiration chapter, it is given in book 2, second year वाली book में, पहला chapter. Complete ventilation in birds. Okay, so on your request, I will. आधा से ज़्यादा lecture नहीं है मैम क्या? I don't understand you. In cardiovascular disorders, there are 7 disorders, but in your notes, there is only 1. So should we also do the others, or the one that is mentioned is important? Cardiovascular disorders, mein, there are 7 disorders. I actually shared 2 notes. एक circulation, wait. Let me take you to the drive. नहीं, ये सिर्फ एक डिसऑर्डर नहीं है, सॉरी. सी, एक डिसऑर्डर ये हो गया. इफ you're मेकिंग नोट्स अभी, व्हाट यू कैन डू इज कि एक लिस्ट बना लो नोट्स डिजीजेस की. मैं डिक्टेट कर रही हूँ. ओपन द नोट्स ऐप ऑन योर फोन और गेट अ नोटबुक जल्दी से 2 minutes में, and I'm telling you the list of disorders. Does that work? Just give me a thumbs up when you're ready. Write down the names of the disorders. I know notes में are scattered, I apologize, लेकिन दिया हुआ है, ठीक है. तो एक तो ये है blue babies and cyanosis. हाँ, ये cyanosis. Then hypertension is given. फिर पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड हाइपरटेंशन का. देन यू हैव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हेमरेज, एथेरोस्क्लेरोसिस, एंड व्हाट एल्स. ये एक्चुअली मेरे अपने नोट्स हैं लास्ट ईयर के कंपाइल हुए हुए, तो काफ़ी सारे तो ये हो गए. एंड आई थिंक वो कुछ डिसऑर्डर्स और भी गिवन है ना. So don't worry about the disorders, but what I'll do is I'll compile them. I'll compile the chapter 14 के सारे disorders in one place, and I'll send them to you properly. I'll send them, don't worry. What was I saying of transport of gases का? So someone said कि explain complete ventilation in birds. ठीक है, मैं कर देती हूँ. So,
सी, इट्स एक्चुअली वेरी इजी, बट आई नो सिंध में जिस गंदी तरीके से दिया हुआ है बहुत मुश्किल है समझना. I'll first open a nice colorful diagram and then I'll explain. Just like birds कहाँ गई इसमें? ख्याल से इसमें birds का given नहीं है. नहीं है given. It's given. Let's get a snapshot of this so it will be easier to explain. No space, I'll add a page. Let's first look at the text. सो बर्ड्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, ये सबसे एफिशिएंट सिस्टम है, इवन मोर एफिशिएंट देन मैमल्स. हम कहते हैं हर चीज़ में कि मैमल्स आर सो कॉम्प्लेक्स, सबसे एडवांस ही हैं, बट रेस्पिरेटरी सिस्टम बर्ड्स का बहुत अच्छा है. एंड वाई? बिकॉज बर्ड्स नीड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, एनर्जी, फ्लाइट. आई होप दैट कनेक्शन मेक्स सेंस. बिकॉज दे हैव टू फ्लाई अ लॉट, उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन के लिए यू नीड द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम दैट कैन बी पॉसिबल. ठीक है. सो उनका जरा सा लंग्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है. एंड हमारे लंग्स में, ह्यूमन लंग्स में जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो एल्वियोलाई है. एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है ना. यहाँ पे वी हैव पैराब्रोंकाई. रिमेंबर द वर्ड. जैसे लंग्स में एल्वियोलाई है तो बर्ड्स के लंग्स में पैराब्रोंकाई, which form the respiratory surface. The air flows through the parabronchi in one direction only. So let's go to the diagram again. ठीक है, इन्होंने दिखाया नहीं है parabronchi, but I'll just explain what happens. So you have air sacs, lungs हैं birds के, लेकिन the lungs are connected to two bags which are known as anterior air sacs and posterior air sacs. ठीक है. तो बर्ड एक दफ़ा इनहेल करती है, पहले एंटीरियर एयर सैक्स के अंदर हवा जाती है, फिर लंग्स में जाती है, और पोस्टीरियर एयर सैक्स से बाहर. बल्कि लेट्स सी, देयर आर 2 साइकिल्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टू पास 1 ब्रेथ थ्रू द सिस्टम. फर्स्ट इनहेलेशन में, सॉरी, एयर फिल्स द पोस्टीरियर एयर सैक्स, and in the first exhalation the posterior air sacs will contract, pushing air into the lungs. Then in the second inhalation, air passes through the lungs and fills the anterior air sacs. Second exhalation mein air sacs will contract, and the air that entered the body at the first inhalation is pushed out of the body. So basically, even if you don't understand this entire mechanism, just know that the flow of air is unidirectional and there is no mixing of fresh air, मतलब oxygen rich air from the environment, and foul air. Foul मतलब CO2 वाली, CO2H. There is no mixing. अब हमारे ह्यूमन लंग्स में भी, इफ़ यूर फेमिलियर विद द टर्म रेजिडुअल वॉल्यूम, तो जब हम इनहेल करते हैं और फिर जब हम एक्सहेल करते हैं तो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हम एक्सहेल नहीं करते. थोड़ा सा वॉल्यूम एयर का हमारे लंग्स के अंदर रह जाता है, जिसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. तो द थिंग इज कि बर्ड्स का सिस्टम, यू नो, हैविंग दिस एंटीरियर एयर सैक एंड पोस्टीरियर एयर सैक, ये सिस्टम होने से होता ये है
कि दिस फ्लो ऑफ एयर इज यूनिडायरेक्शनल. सी, एयर अंदर आई, पहले पोस्टीरियर एयर सैक्स में आई, पोस्टीरियर एयर सैक्स ने लंग्स में भेजी. लंग्स में पैराब्रोंकाई होते हैं. पैराब्रोंकाई इज बेसिकली देयर वर्जन फॉर एल्वियोलाई. पैराब्रोंकाई में गैसेस एक्सचेंज होती है. फिर यहाँ से जो एयर आई वो निकल के एंटीरियर एयर सैक्स में आई, एंटीरियर एयर सैक्स से बाहर. इट्स यूनिडायरेक्शनल. और ह्यूमन लंग्स में what happens is कि there is a certain mixing, while ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा. यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रही, एक ही फ्लो में सब बाहर जा रहा है. लाइक एयर एंटर्स द पोस्टीरियर एयर सैक्स से लंग्स में, लंग्स से एंटीरियर एयर सैक्स से बाहर. So this system is more efficient क्योंकि इसमें कोई mixing नहीं हो रही. There is no residual volume, and therefore it is very very efficient. And you should remember this word parabronchi वाला बस. तो मैंने बहुत डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं किया, बट आई होप काफ़ी क्लियर हो गया होगा. अलीज़े खान, ओके. इफ़ यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दिस, let me know on WhatsApp. फिर मैं ज़रा I'll try to make a more decent explanation. So that's it for today. And now we have only those chapters left: animal kingdom, and viruses and bacteria. So I'll try my best कि वो एक ही go में cover हो जाए, because I won't be spending a lot of time explaining stuff in bacteria वाला chapter as well, और viruses में भी. Animal kingdom, animalia में ज़रा explain करूँगी ज़रा detail में, लेकिन viruses and bacteria I'll just skim. So I'm letting you know that beforehand, and we'll have our class probably on Wednesday. So yeah, that's it. And Allah Hafiz.